Good morning, students. Today we will start the chapter Our Environment, which is chapter 15 of the NCERT book, class 10th. I welcome all of you to the digital platform of Nosegay Public School. So let us start our chapter. So what do we mean by the term environment? The term environment is derived from a French word that is environ, जिसका मतलब होता है encircle करना या surround. So everything which surrounds us is collectively called as environment. The environment constitutes a life support system. Okay, तो environment जो है it is a combination of physical and biological surroundings of an organism where the organism lives. Now all the living organisms जिसमें कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, they are dependent on the environment for different types of needs like energy, air, water, food, clothing, transportation, occupation, medicine and everything. But the problem arises when the uncontrolled human activities, it starts damaging the balance in the environment or in the nature. So let us first see that how the human activities are creating problem in our environment. So what happens when we add our waste to the environment? Our waste means the waste which are generated by the human activities. We know that the population of human beings is increasing day by day. The increasing human population and the technological advancements have actually damaged the balance between nature and human beings, and this is the basic cause of environmental problems. 9th class में हमने पहले से ही पढ़ा था about different biogeochemical cycles of the environment जो हर चीज़ को balance करके रखता है. Okay, but what happens when we add a lot of waste to our environment? Then these waste, it causes different types of pollution like pollution of air, water and soil. So the waste materials produced are generally of two types, biodegradable and non-biodegradable. ये हमें पहले से पता है that substances that are broken down by biological processes can be said as biodegradable substances, and those substances which are not broken down in this manner, that means they cannot be broken down by biological processes, are said to be non-biodegradable substances. अब ये जो substances हैं, जो non-biodegradable substances हैं, especially these are causing different types of pollution in the environment and causing different environmental problems like depletion of ozone layer, global warming, etc. So what do we mean by an ecosystem? Ecosystem मतलब biotic components and abiotic components together and their interrelations is called as ecosystem. The term ecosystem was coined by A.G. Tansley in 1935. So in simply अगर हम definition करें तो we can say that an ecosystem is all the living and non-living things in an area, है ना. Living things constitutes the biotic components and non-living constitutes the abiotic component. So biotic component plus abiotic component and their relation to the environment forms the ecosystem. Examples of ecosystem can be a desert, any rainforest, ocean, any swamp area, pond, grassland. So जैसे कि for example a pond ecosystem consists of non-living components like air, soil, water, living components जैसे कि pond के अंदर aquatic plants and animals भी होते हैं. If we talk about a grassland ecosystem, that it includes the abiotic components like air, soil, light and water, and biotic components, for example plants and animals, those who are living in the grassland. That means हर ecosystem में living components और non-living components दोनों का combination होता है, and how they relate themselves to the environment is called as ecosystem. On the basis of nature,
ecosystem can be divided into two different categories. ecosystem दो तरह के हो सकते हैं, एक है natural और दूसरा है artificial. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ऑब्वियसली नेचुरल इकोसिस्टम मीन्स जो नेचुरली ऑकर करता है, ओके, उसको किसी ने बनाया नहीं है. लेकिन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब है विच हैज़ बीन क्रिएटेड एंड ऑल्सो मेंटेन्ड बाय ह्यूमन बींग्स is called as an artificial ecosystem. तो natural ecosystem is an ecosystem which operates under natural condition without human interference. ओके, तो नेचुरली जो चीज़ें अपने आप ही वो इकोसिस्टम में जो हैं बैलेंस होती रहती है, उसमें कोई भी किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज नेचुरल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम इज़ अगेन ऑफ टू टाइप्स, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक. टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे जो भी इकोसिस्टम है, जैसे कि एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर ग्रासलैंड, डेजर्ट, फॉरेस्ट एट्सेट्रा. और दूसरा है एक्वाटिक इकोसिस्टम. तो एक्वाटिक इकोसिस्टम जो पानी के अंदर इकोसिस्टम होता है, जैसे कि पॉन्ड, सी, ओशन, जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं. तो नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स में यू कैन से गिव एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक, जैसे कि डेजर्ट, फॉरेस्ट, ओशन एट्सेट्रा. And the second ecosystem is artificial ecosystem. So ecosystems which are engineered by man and they are also being maintained by man are called as artificial ecosystem. And इसको हम human made या anthropogenic ecosystems भी बोल सकते हैं. इनके कुछ एग्जाम्पल्स है. फॉर एग्जाम्पल क्रॉप फील्ड, हम जो एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, उसमें क्रॉप्स लगाते हैं, ये हम इंटेंशनली लगाते हैं. ह्यूमन बीइंग इज़ बीइंग इंडल्ज्ड इन दीज एक्टिविटीज़. सो क्रॉप फील्ड जो है वो हमेशा याद रखना आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है. इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ पार्क, यू आर मेकिंग अ डैम, आप एक छोटा सा एक्वेरियम या एक बड़ा सा फिशरी टैंक बनाते हो, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम.